Hi everyone, good afternoon and welcome to this session with LearnFatafat. So let's start the session क्योंकि already थोड़ा सा delay हो गया है आज. And today we will again be continuing chapter of why do we fall ill. 1 minute. Yeah. Okay. So why do we fall? ये है आपका term 2 का chapter 13 from your biology portion. तो आपको पता है कि टर्म 2 में बायो पोर्शन में एक ही चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल एंड ये मार्क्स है इसका 8 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का इन योर टर्म 2 पोर्शन. सो लेट्स सी कि हमको ये 8 मार्क्स जो लेने हैं इसमें क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं. तो ऑल द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर आई हैड टेकन इन द फर्स्ट सेशन एंड टुडेज टॉपिक विल बी अबाउट इन्फेक्शियस डिजीजेस. Okay, so we will be doing the session class 9 students, CBSE board and subject है science. Okay, so let's learn फटाफट. चलो let's start. Infectious diseases के बारे में आज पढ़ेंगे. Infectious diseases में we will divide this into two parts. Hello Arav, good afternoon. Infectious diseases में actually there are 3 to 4 subtopics. ठीक है, एक्चुअली फाइव सब टॉपिक्स हैं इसमें. तो इसके लिए हम इसको 2 पार्ट्स में करने वाले हैं. सो व्हाट वी हैव टू लर्न अबाउट इन्फेक्शियस डिजीजेस. पहली बात तो हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर द एजेंट्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस. सेकेंडली व्हाट वी हैव टू लर्न कि ये स्प्रेड कैसे होती हैं, व्हाट आर देयर वेज, व्हाट आर द मीन्स ऑफ स्प्रेड. Third, we will see the organ manifestation और tissue manifestation of these diseases कि कौन सी disease जो है कौन से organs को या tissues को affect करती है. Fourth topic in this is about the principles of treatment of the disease. एक बार हमें अगर मालूम पड़ जाए कि disease कौन सी है and what is their cause, then we will see about their treatment. And what is the fifth topic here? Fifth topic here is, yes, can you tell me? देखो टेक्स्ट बुक में आपने पढ़ा ही होगा ना. चलो tell me the chat section. So here the fifth topic and the last topic of this chapter is the principles of prevention. कि डिजीज को प्रिवेंट कैसे करेंगे. ओके, इसलिए इसको 2 पार्ट्स में हम पढ़ेंगे. आज है इसका पार्ट 1 where we will be covering the first 2 topics. Agents क्या हैं and how do they spread, how these diseases spread. So this we will cover in part 1 and the remaining topics, third, fourth and fifth topic obviously ये हम करेंगे next session में part 2 में cover करेंगे. ठीक है, is it clear? किस फॉर्म में हम पढ़ने वाले हैं? I hope it is clear. चलो then let's start. Agents and spread. So before we start, can you tell me infectious diseases क्या होती हैं? ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. Infectious diseases का दूसरा नाम है communicable diseases. This also I have told you, right? और non-infectious जो होती हैं, those are the non-communicable diseases. अब infectious diseases communicable हैं because the microbes, इसके लिए mainly कौन responsible है? Microbes are responsible for the infectious diseases and we will see the types of microbes and its examples also. So microbes are the main cause of this spread, they are the cause for the spread of infectious diseases. Microbes की वजह से, and these microbes they can spread, they spread in the community. एक भी इंसान को अगर वो disease है और अगर वो obviously we are social being, man is a social animal, तो community में तो people हैं, society है, community है, तो वो interaction होती है. So because of that, ये जो type के अगर infection हो गया, if someone gets infected with any microbe, तो वो community में spread हो जाता है and other people might also get that disease. इसलिए उनको बोलते हैं infectious diseases. That's a simple meaning of this term.
ओके, इज इट क्लियर? ओके, चलो, तो लेट मी शो यू इन्फेक्शियस डिजीजेस में एजेंट्स कौन कौन से हैं और इनकी स्प्रेड कैसे होती है. सो लेट्स सी वन वीडियो एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू इन दैट वीडियो. ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट. इसको हम शुरू करते हैं. यस आरव, ऑल थिंग्स क्लियर? चलो, अब हम वीडियो में देखते हैं इन दोनों टॉपिक्स के बारे में. फर्स्ट आई विल शो यू द एजेंट्स. ओके, नाउ आपका फोकस इस वीडियो में होगा एंड सी व्हाट आई एम टेलिंग. ठीक है, नॉट सी, लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग एंड सी. आप वीडियो को देख सकते हो. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्टडी ऑफ infectious agents. तो agents, these are the cause of infectious diseases. Infectious agents, अब देखो infectious diseases का एग्जाम्पल देखो, बहुत सारी टाइप की. यू कैन सी हियर सो मेनी नेम्स आर रिटन. तो ये सारे नाम जो हैं ये सारे के सारे infectious diseases के हैं. ओके, some of them are given here. So for example you can see Ascaris, common cold है cholera, dengue fever, kala azar, malaria, typhoid, elephantiasis which is also known as filariasis. Okay, then we have 1 minute. ओके, सो ये ट्यूबरक्लोसिस एंड ऑल, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस. एंड व्हाट आर द कॉज, व्हाट आर द एजेंट्स दैट कॉज दीज डिजीजेस. तो एजेंट्स में हम मेनली पढ़ेंगे, एजेंट्स दो टाइप के हो सकते हैं. या तो वो हो सकते हैं द माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो इफ यू सी फ्रॉम दिस लिस्ट, इस लिस्ट में देखो, अब मैं आपको कॉज बताती हूँ. एक है फंगाई, देन दीज आर सम वर्म्स, बैक्टीरिया, ये सब एजेंट्स के एग्जाम्पल हैं. वायरस है और प्रोटोजोआ है. ठीक है, अब देखो 5 मेन एजेंट्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं. ना आउट ऑफ दीज 5, इसमें से कोई एक है जो माइक्रोब नहीं है. कैन यू टेल मी व्हिच वन इज नॉट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि वी कैन सी दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं. वी कैन नॉट सी देम विद द नेकेड आई. So out of these 5, which one is not a microorganism? Yes, fungi. Fungi भी right है. That is also right. Some type of fungi are there. Fungi में it can be microorganism or it cannot be. दोनों example right है. Yes, Arav. And you can see यहाँ पे worms जो है, worms. Okay, especially the round worm और tape worm. ऐसे सब worms जो है ये हैं, ये मल्टी सेल्यूलर है. दीज आर नॉट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दीज आर मल्टी सेल्यूलर एंड वी कैन सी देम. ठीक है, ये जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एस्केरियासिस. तो हम पढ़ेंगे अबाउट ये मेन 5 एजेंट्स के बारे में एंड विच आर द डिजीजेस विच दे कॉज. So specifically also I'll show you. So let us arrange them in a order. Okay, तो ये देखो. Now infectious agents को you can see virus, bacteria, fungi, protozoa and worms. These 5 main categories are there. Virus are mainly responsible for what type of diseases? Example है dengue fever, common cold. And can you tell me any other example? बहुत ही common example. Virus कौन सी disease के लिए responsible है? Yes? Yeah, very good. COVID, that's the right answer. तो आजकल जो बहुत ज्यादा जो ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है बिकॉज ऑफ दिस डिजीज. सो दिस इज ऑल्सो द वर्क ऑफ अ वायरस. इसमें भी एजेंट वायरस ही है. ओके, तो वायरल डिजीजेस में वी हैव सो मेनी ऑल्सो. कॉमन कोल्ड हो गया, डेंगू फीवर, कोविड. देन यू ऑल्सो नो एड्स, acquired immunodeficiency syndrome. This is also because of a virus. And AIDS is because of which virus? This you must be knowing already. एड्स का कॉज कौन सा वायरस होता है? उस वायरस का नाम क्या है? एटलीस्ट द शॉर्ट फॉर्म यू नो. एब्रीविएशन, एड्स भी एक एब्रीविएशन ही है. सॉरी,
So AIDS, which is caused by the HIV, human immunodeficiency virus. Human immunovirus HIV, ये वायरस है which is responsible for the disease AIDS. तो ये वायरस, तो आपने देखा वायरस जो है कितनी सारी डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. Okay. Now let's see the second category, bacteria. Bacteria is responsible for some diseases like cholera, typhoid, and tuberculosis. Okay. Also, we can say, okay, virus में हम नाम, I'll tell you the names of virus which are given to you in the textbook और आपको जिसके बारे में पढ़ना है. वायरस में आपको सार्स वायरस, इसकी फोटो भी दी है. ओके, सार्स, दिस इज अ फॉर्म ऑफ वायरस. सो लेट मी टेल यू, ये पहले फर्स्ट वाला मैं बता रही हूँ. वायरस में प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ दिस वन. सो ऑल्सो डू यू नो द फुल फॉर्म ऑफ सार्स? यस, it is the severe acute respiratory syndrome. तो SARS virus है and this virus is responsible for disease. भी एक SARS है and it is also SARS में ही एक variant होता है. ये जो SARS, इसके दो variant है. एक है SARS CoV that was responsible for SARS disease itself और एक SARS CoV-2 and this one is responsible for the COVID disease. ओके, तो ये जो टेक्स्ट में इसकी फोटो भी दी है वो आप याद रखो, सार्स वायरस. देन यू कैन ऑल्सो रिमेम्बर, ओके, वायरस में एक ही दिया है. सो लेट्स सी द सेकंड वन. अब बैक्टीरिया में विच वन यू हैव टू रिमेम्बर? आई विल टेल यू द नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया. सो ये वाला इरेज कर देते हैं. बैक्टीरिया की फोटो जो दी है इन योर टेक्स्ट बुक, दैट इज विच वन? सो बैक्टीरिया में एक स्टैफिलोकोकाई का दिया है फोटो और एक है, ओके, ओनली वन, स्टैफिलोकोकाई. स्टैफिलो, नेम्स ऑफ बैक्टीरियाज आर ऑलवेज, बैक्टीरियाज कुछ नहीं होता, बैक्टीरिया इटसेल्फ इज द प्लूरल. इसका सिंगुलर होता है बैक्टीरियम. यस, एक्ने, वेरी गुड. स्टैफिलोकोकस देखो, लेट मी टेल यू, Staphylococcus. So this is responsible for the disease. Disease का नाम है acne. तो ये है एक बैक्टीरिया का नाम और disease which it is responsible for. Okay, this is done. Now let's see the third one. Third one is fungi. And fungi leads to, fungi is a plural और इसका singular होता है fungus. Fungi are responsible for some diseases, some skin diseases, and one example is ringworm. Okay, या फिर other skin diseases, some other skin diseases like you can say herpes and all, वो भी होते हैं. So mainly skin infections are the work of fungi. The next one is protozoa. Protozoa cause disease like malaria and kala azar. Okay, प्रोटोजोआ में कौन सा याद रखना है हमें नाम? आई थिंक टू प्रोटोजोआ गिवन. वन इज ट्रिपैनोसोमा एंड वन इज लिशमेनिया. ओके, तो ट्रिपैनोसोमा ये प्रोटोजोअन है एंड द डिजीज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, व्हाट इज द डिजीज? फूड पॉइजनिंग किसके लिए लिखा है आपने आर? विच वन? Protozoa. Trypanosoma is responsible for sleeping sickness. Okay, so sleeping sickness, I mean this is called as sleeping sickness क्योंकि this is related to some sort of a disorder in the sleeping pattern, वो इफेक्ट हो जाता है. तो ये प्रोटोजोन का काम है. और एक प्रोटोजोन का नाम कौन सा दिया है? अच्छा, फंगाई फूड पॉइजनिंग. ओके, राइट, ठीक है, दैट्स राइट, food poisoning. And one more protozoan is the leishmania, and which is a disease which it causes, that is kala azar. इसका भी मेन, दिस इज लाइक बुखार बोलते हैं जिसको, मेनली फीवर हो जाता है इसमें एंड सम बॉडी पेन एंड ऑल. तो काला आजार के लिए ये प्रोटोजोअन रिस्पॉन्सिबल है. अगेन प्रोटोजोआ इज अ प्लूरल
एंड इसका सिंगुलर है प्रोटोजोअन. ओके, so let's see the next category now. The last categories of worms. Worms are responsible for diseases like Ascariasis. मैंने आपको बताया था Ascariasis के लिए रिस्पॉन्सिबल है राउंड वर्म. एंड ये राउंड वर्म जो है कहाँ पे इट इज फाउंड मेनली इन द विच रीजन ऑफ द बॉडी, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, तो वर्म्स में हम याद रखेंगे राउंड वर्म. वैसे एक और टेप वर्म भी होता है, पर अभी वैसे बहुत होंगे, बस सिलेबस में जितना है हम उतना कर लेते हैं. सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्केरियासिस. Okay, and the full name is given Ascaris. If I say इसका दूसरा नाम, we can say it is also known as Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides, वो भी Ascariasis ही होता है. And roundworm is the agent responsible for this disease, जो पाया जाता है कहाँ पे, small intestine. Yes, elephantiasis. That's right, elephantiasis. ये भी वर्म की वजह से होता है. वेरी गुड आरा, आई मस्ट से यू आर वेल प्रिपेयर्ड विद दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर. एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं. एलिफेंटियासिस, डू यू नो व्हाई इट इज कॉल्ड एलिफेंटियासिस? इसका हम नाम से ही गेस कर सकते हैं. एलिफेंटियासिस, इसके नाम में एलिफेंट है. व्हाई इट इज नोन एज एलिफेंटियासिस? बिकॉज वो जिस रीजन को जैसे अफेक्ट करता है आर्म्स या लेग्स में, देयर इज अ स्वेलिंग, और बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, एंड द स्किन बिकम्स ब्लैक एंड थिक लाइक दैट ऑफ एन एलिफेंट. इसलिए इसका नाम है एलिफेंटियासिस. ओके, एंड मोर कॉमनली इट इज ऑल्सो नोन एज फाइलेरियासिस. फाइलेरियासिस. ओके, FILA, फाइलेरियासिस. फाइलेरियासिस एंड एलिफेंटियासिस सेम थिंग. एलिफेंटियासिस को कॉमनली बोलते हैं, याद रखने के लिए इजी है. ओके, क्लियर. तो देखो एजेंट्स, इन्फेक्शियस एजेंट्स तो हमने देख लिए कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड वर्म्स. तो ये जो एजेंट्स हैं कौन सी डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. सो वी हैव गॉट एन आइडिया ऑफ दोज थिंग्स. नाउ व्हाट इज द नीड टू नो दीज एजेंट्स. ये देखो डिफरेंट ग्रुप्स. इसकी नीड क्या है कि व्हाई आई मस्ट नो कि मेरी जो डिजीज है, व्हाट इज द एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. क्या रीजन हो सकता है. एजेंट जानने से हमें किस चीज में हेल्प मिलने वाली है. सो इफ आई नो द एजेंट, आई विल बी एबल टू फाइंड अ प्रॉपर ट्रीटमेंट टू माय डिजीज. ओके, तो अगर मुझे पता है कि बैक्टीरिया, क्योंकि हर एक एजेंट का एक अलग मैकेनिज्म होता है बॉडी में बॉडी को इन्फेक्ट करने का, बॉडी सेल्स को. For example, okay, I will tell you about, let me erase the other things. 1 minute. ये बाकी चीजें डिलीट कर देते हैं. तो देखो ये ट्रीटमेंट में कैसे हेल्प करता है. अब जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स इन द सेम ग्रुप, लाइक अगर ये A एंड B, ये दो बैक्टीरिया हैं, ये हैं वायरस, ये दो वायरस दिखाए हैं A एंड B. अगर हमने ट्रीटमेंट के लिए एक मेडिसिन यूज की है, ठीक है, नाउ दैट मेडिसिन विल बी ट्रीटिंग द एजेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप. यानी कि ये मैं कौन सी मेडिसिन की बात कर रही हूँ, विच टाइप ऑफ मेडिसिन इज दिस. दिस इज द, ये जो बैक्टीरिया पे काम करती है, विच किल्स द बैक्टीरिया, हेल्प्स इन किलिंग द बैक्टीरिया. दीज आर द एंटीबैक्टीरियल. एंटीबायोटिक्स जो मोस्टली होते हैं ना, एंटीबायोटिक्स, most of them are antibacterial. मीन्स वो बैक्टीरिया अगर रिस्पॉन्सिबल है डिजीज के लिए तो उसको किल करने में हेल्प करते हैं. एंड हाउ इज दैट डन. बैक्टीरिया का कैसे होती है वर्किंग. बैक्टीरिया बॉडी में सेल्स को कैसे इन्फेक्ट करते हैं. दे विल ट्राई टू फॉर्म अ सेल वॉल अराउंड देमसेल्व्स. कोई भी एक बैक्टीरिया है, ये अपने आजू बाजू एक सेल वॉल बनाने की कोशिश करता है, और इसके लिए ये फॉलो करता है कुछ बायोकेमिकल प्रोसेसेस, सम बायोकेमिकल पाथवेज.
and that is how the bacteria can survive in our body. And if I want to inhibit, if I want to stop their growth, तो what I'll have to do, तो मुझे एक ऐसी मेडिसिन लेनी होगी जो उनका ये सेल वॉल बनाना ही बंद कर दे. ओके, एंड सेल वॉल बनाना ही बंद कर देगा बाय अफेक्टिंग द बायोकेमिकल पाथवेज ऑफ द बैक्टीरिया. इस पे वो मेडिसिन इफेक्ट करेगी. तो जब वो सेल वॉल ही नहीं बना पाएगा बैक्टीरिया, तो वो फिर इट विल बी किल्ड इन द बॉडी. That's how we will be treating the diseases which are caused due to bacteria, where the agent is a bacterium. Okay, and but if your cause of the disease is not bacteria but virus, then do you think this antibiotic will be helpful in curing the disease? Yes, block the biochemical pathways. Very good. Arnav, that's exactly right. Very good. But these medicines, are they going to work on the virus? वायरस क्या करता है? वायरस का जो इन्फेक्ट करने का मैकेनिज्म है, दैट इज डिफरेंट देन द बैक्टीरिया, एंड इट डजंट फॉर्म अ सेल वॉल. ओके, सेल वॉल नहीं फॉर्म करता वो. ये वायरस कैसे करता है? ये सिर्फ हमारी बॉडी सेल में ही, इट विल जस्ट एंटर द बॉडी सेल एंड वहीं पर वो रहेगा एंड इट विल derive nutrition from our body cells only. So we are the host for the virus. Okay, तो इसके लिए ये जो एंटीबायोटिक जो एंटीबैक्टीरियल हैं, दे आर नॉट गोइंग टू वर्क ऑन डिजीजेस व्हिच आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ वायरस. यस, वेरी गुड आरव. तो इसके लिए दैट इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू नो द कॉज, द एजेंट व्हिच इज कॉजिंग अ डिजीज. ओके, एंड एंटीवायरल मेडिसिन बनाना, दिस इज मच मोर डिफिकल्ट देन एंटीबैक्टीरियल. डू यू नो व्हाई? क्योंकि देखो, ये जो बैक्टीरिया है ये सेल वॉल बनाते हैं और फिर सेल वॉल बनाने का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है व्हेन वी टेक द एंटीबायोटिक. एंड इन आवर बॉडी वी ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ सेल्स, एनिमल सेल्स, एंड वी आवर सेल्स डोंट हैव एनी सेल वॉल. सेल वॉल किस में होती है? प्लांट सेल में, नॉट इन एनिमल सेल. तो आवर बॉडी सेल्स are not affected or harmed when we take this type of medicines, antibacterial ones. लेकिन एंटीवायरल बनाने में प्रॉब्लम ये है कि वायरस जो है इट इज लिविंग इन अ बॉडी सेल ओनली, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट. I mean, if you try to kill that virus, it will damage our body cell, क्योंकि वो उसी का पार्ट है, उसी से न्यूट्रिशन ले रहा है. That's why. इसलिए एंटीवायरल बनाना डिफिकल्ट है कंपेयर टू एंटीबैक्टीरियल. ठीक है, अंडरस्टूड. चलो लेट्स मूव फर्दर. अब देखो इस पे ही हमने बहुत टाइम कर दिया है. ठीक है, सो नाउ दिस इज द मेन रीजन. आई होप यू अंडरस्टूड कि हमें क्यों पता करना चाहिए एजेंट के बारे में. सो मेडिसिन में बी एंटीवायरल इन नेचर और एंटीफंगल, और इट मे बी सम एंटीबायोटिक. और यहाँ पे you can see some names, some examples are given of medicines which act on the different agents. Okay, understood? Very good, thank you Arav. So students, if you have understood, बहुत अच्छी बात है when you write that you have understood. And अगर कोई भी डाउट होता है तो then let me know in the chat section. And डाउट नहीं है तो if you understand please write understood or clear. So it helps me to know कि yes, the topic is going good and it is clear to you. तो एंटीवायरल यहाँ some names are given here. अभी आपको एक नाम, बहुत ही कॉमन नाम पता होगा, पेनिसिलिन. you must be knowing already. पेनिसिलिन क्या है? This is the medicine belonging to this category, antibiotic, है ना. ऐसे ही अभी एंटीबायोटिक्स, इसका मैंने आपको वर्किंग बता दिया, मैकेनिज्म. यहाँ पे दो और एग्जाम्पल दिए हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एमॉक्सिसिलिन है. देन एंटी फंगल यानी दे स्टॉप एंड ग्रोथ फंगाई. एग्जाम्पल इज गिवन एम्फोटेरिसिन. एंड फॉर एंटीवायरल दे हैव गिवन द एग्जाम्पल हियर एमिनटाडीन. ओके, तो एंटीवायरल्स हैं पर बहुत कम कंपेयर टू एंटीबैक्टीरियल्स. ओके, so let's see further. I hope it is clear till here.
अब पढ़ते हैं आगे के टॉपिक में। अब मैंने आपको बताया था सेकेंड टॉपिक हम कौन सा पढ़ने वाले थे आज, दैट वाज मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीजेस. So in how many categories can we divide the spread of diseases? So 1, 2, 3 and 4. I think 4 main categories we can make here. कौन सी can you name some of the means of spread of diseases? Let me know फटाफट in the chat section. कि और ये obviously हम infectious diseases की बात कर रहे हैं. And you can very easily name at least the disease which is COVID. What is the means of spread of COVID? Can you tell me? Yes, airborne, waterborne. Very good. That's right. Okay, 5 categories. ठीक है. So, which 5 categories we can divide them into? Airborne is right. Airborne, waterborne. तो एक तो है which are spreading by means of air. Second is water help कर रहा है उनको spread करने में. Yes, that's right. फॉर्माइट बॉन्ड. फॉर्माइट, फॉर्माइट क्या लिखा है आपने? यस, वेक्टर्स सही है. एयर, वाटर, देन वी विल लर्न अबाउट डिजीजेस व्हिच आर स्प्रेडिंग थ्रू फिजिकल कांटेक्ट. 1 मिनट, ये क्या है? हाँ, फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर. इसको हम मेनली 2 कैटेगरीज में पढ़ लेंगे. वन इज ओनली दोस व्हिच आर स्प्रेड बाय casual contact, and the second category we will learn which are by the sexual contact. And here only we will also learn blood to blood contact या फिर which are spread during pregnancy, pregnant mother to the unborn child, या फिर when the mother is breastfeeding the child. तो ये सब ways से आपको already पता है कि कौन सी disease spread होती है. This is mainly for the spread of AIDS, right? And fourth category we will learn about, yes, vectors, जो animals help करते हैं in spreading the diseases. So these are basically the means of spread of diseases, right? So formite आपने क्या लिखा था? I didn't get that. So let's see in detail how and what these are और कौन सी diseases spread हो रही हैं. So infectious diseases में अब हमने ये पढ़ लिया है कि microbes हैं and they can spread through different means: air, water, physical contact and by animals. Okay, so also these, and because these are spread in the community इसलिए इनको नाम भी दिया है communicable diseases. Okay, first let us start with the airborne diseases. Which are the airborne diseases? Diseases which are spread through air. So what can be some examples? Contact with patients act as sources of infections. Okay. Formite लिखा है. Okay. So I think that is the same. Casual contact वाली category में हम उनको डाल सकते थे. Okay. ठीक है. चलो. So airborne में हम we can write which ones. Very common ones are the common cold तो है ही, है ना? Common cold है. अभी किसी को भी कॉमन कोल्ड होता है तो इट्स बेटर यू रिमेन फार फ्रॉम दैट पर्सन, नहीं तो वी आर ऑल्सो एट एन रिस्क ऑफ कैचिंग इट. देन यू हैव कोविड ऑल्सो, COVID-19, then pneumonia, okay, pneumonia, or there is another disease, tuberculosis. So these are diseases we can list under the examples of airborne diseases. Now why are these known as airborne diseases? Let's see that. So एयरबॉर्न मतलब के इसके जो माइक्रोब्स हैं वो एयर के थ्रू स्प्रेड होते हैं. Now for example, this is a person who is infected from common cold और इसने छींक दिया या फिर खांसी की. Okay, he's coughing or sneezing. So what will happen? All the microbes which are responsible for common cold, ये microbes air में आ जाएंगे. They will be traveling in the air droplets, and if you are or any healthy person is near this person तो क्या हो जाएगा?
एंड दिस पर्सन इज ब्रीथिंग इन द एयर, और अगर इस एयर में इसके माइक्रोब्स हुए तो दिस हेल्दी पर्सन में गेट इन्फेक्टेड बाय द सेम टाइप ऑफ माइक्रोब्स. तो हर एयरबोर्न डिजीज का मेथड ऑफ स्प्रेड इज लाइक दिस. यस, ट्यूबरक्लोसिस आल्सो, है ना. तो इसका मतलब है कि एयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ऐसी डिजीजेस स्प्रेड करने में. नाउ वाटरबोर्न डिजीजेस, ऑब्वियसली डिजीजेस व्हिच आर स्प्रेड थ्रू वाटर. क्या एग्जांपल लिख सकते हैं हम इसमें वाटरबोर्न में? सो वी कैन राइट हियर मेनली कोलेरा. ओके, कोलेरा. नाउ लेट अस सी कोलेरा कैसे स्प्रेड होता है? थ्रू वाटर. तो वाटर यानी कि ऑब्वियसली ये जो ह्यूमन वेस्ट है. नाउ if this is an infected person who is suffering from cholera, so cholera, we know cholera किसकी वजह से होता है? It is a type of bacteria causes cholera. तो वो जो बैक्टीरिया है इसके वेस्ट से, ये ह्यूमन वेस्ट हैज गॉन इनटू दिस वाटर सिस्टम, एंड इफ दिस वाटर सिस्टम इसकी अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हुई है, एंड इफ इट्स polluted वाटर, एंड इफ अ हेल्दी पर्सन ड्रिंक्स इट, तो क्या होगा? वो भी इन्फेक्ट हो जाता है इस कोलेरा डिजीज से. सो दैट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू ऑलवेज ड्रिंक क्लीन, फिल्टर्ड एंड और बॉइल्ड वाटर, है ना, क्योंकि अनक्लीन वाटर से ऐसे कोलेरा स्प्रेड हो सकता है थ्रू वाटर. यस, राइट, कोलेरा, वेरी गुड. ठीक है, तो ये हो गया एग्जांपल वाटरबॉर्न डिजीज के स्प्रेड का. देन वी कैन से, wait, physical contact. Say, let me tell you. So physical contact, we can write two types of contact. One is just casual contacts like what? Handshake or something. Okay, handshake या wrestling, ये सब में क्या होता है? These are all casual contacts. And second is sexual contact. So what are the types of diseases which can spread just through casual contact? अब इसमें सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में यू नो वेरी वेल दैट वी कैन नेम सम डिजीजेस लाइक एड्स और साइफिलिस और गोनोरिया भी होती है. ओके, बट don't I mean there should be no misconception of spread of this. For example, especially AIDS, this is only spread by sexual contact, not by casual contact. यानी कि किसी से हैंडशेक करने से, if you hug a person, then you will, and if that person is infected with AIDS, then you won't get the disease. So अगर किसी person को AIDS है, doesn't mean that you maintain a distance, physical distance from them. Yes, that's not required. Okay, क्योंकि वो casual contact से नहीं spread होने वाला. So sexual contact is responsible for spread of diseases like AIDS. We know AIDS किस, बिकॉज ये जो HIV वायरस जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, दैट विल स्प्रेड थ्रू ईदर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और ब्लड, ब्लड टू ब्लड स्प्रेड हो सकता है इफ यू यूज द इन्फेक्टेड सिरिंजेस फॉर द ब्लड टेस्ट. अगर एक इंसान का टेस्ट किया है, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में किसी का एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटलाइज्ड है, इफ ही नीड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो अगर इन्फेक्टेड सिरिंजेस यूज की हैं, तो अगर उस सिरिंज में ऑलरेडी एक पहले जो ब्लड टच हुई है उसमें HIV होगा, तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट आल्सो गेट दैट इन्फेक्शन थ्रू दैट अनक्लीन, थ्रू दैट इन्फेक्टेड syringes. ठीक है, then this will also be, as I told you, from a pregnant mother to the unborn child, or it can be also through the breastfeeding, वो भी हो सकता है. So this we can say about AIDS. And what can we say about diseases which are spread through casual contact like handshake or wrestling, or when you hug a person, just when you are in close contact to a person, with a person, उससे क्या क्या हो सकता है? So you might get diseases like chicken pox. Especially you must be knowing, किसी को भी chicken pox हो जाए या measles हो जाए, you must have experienced in your childhood, या किसी को भी स्कूल में हो जाता है तो इसको बहुत अच्छी खासी छुट्टी मिल जाती है स्कूल से. Then you don't have to go to school at least for 1 or 2 weeks, जब तक ये पूरा जो है आपका chicken pox या measles heal नहीं हो जाता. Right? Have you experienced it? Let me know. So actually it is not a good experience,
बट ये वो जो छुट्टी मिलती है वो बहुत अच्छी होती है फॉर मेनी पीपल. So chicken pox, measles, and some other diseases you may say like common cold. ये भी एक ऐसी डिजीज है जो फिजिकल कांटेक्ट से हो सकती है बिकॉज दैट ओनली वो किसी का हाथ sorry when the person is sneezing or coughing उसके हैंड में अगर वो जर्म्स होंगे या हैंडकरचीफ में तो वो हमें भी इन्फेक्ट कर सकते हैं. देन कंजंक्टिवाइटिस, this also we can say in which that this affects the eyes, pink eyes बोलते हैं जिसको. So these are spread by just casual contact, and then under with sexual contact we can write AIDS. I hope you know the full form of AIDS. That is acquired immunodeficiency syndrome. Okay, तो ये हो गया spread of diseases physical contact. So let's see here. Again I'll show you example. यहाँ पे इसका लिखा है an infected person is going to transfer it to the healthy person, or when the baby is nourished या blood donation के time पे या blood transfusion. So this is, but remember that this is not transferred by physical contact. And the last category of the means of spread is animal borne diseases. Animal borne diseases में कौन responsible होता है? Other animals. Diseases which are spread by the other animals. तो ये अदर एनिमल्स कौन हो सकते हैं? एंड दीज एनिमल्स जो कैरी करते हैं इस इन माइक्रोब्स को फ्रॉम द इन्फेक्टेड टू द हेल्दी पर्सन, दीज आर नोन एज द वेक्टर्स. ओके, सो दे एक्ट एज, यस, मस्किटोज. हाँ, सही है. तो दीज आर द इंटरमीडियरीज, इंटरमीडिएट काम करते हैं ना वो. तो वेक्टर्स बोलते हैं इनको. यस, मस्किटोज आल्सो, मस्किटोज, या दे स्प्रेड मलेरिया. मस्किटोज, और यू कैन आल्सो से एक और कॉमन एग्जांपल है ऑफ द रैबिड डॉग्स. ठीक है, रेबीज जो होती है, इफ अ डॉग इज इन्फेक्टेड बाय रेबीज तो वो आपको वो इन्फेक्शन दे सकता है रेबीज का. I mean, अगर if that dog is already vaccinated for it, या आजकल तो I mean if you have a pet तो उसको तो वैक्सीनेशन हुई होती है, तो then it's of no danger. So diseases spread by other animals, malaria, and then we can also say elephantiasis, वो भी other animal से ही होती है. Okay, malarial infection, you know. So person suffering from malaria, इसको मच्छर ने काटा and then it is carrying the microbe, और वो infect कर सकता है एक healthy person को, and that infected person also gets malaria. This is very very common, ये तो सबको पता है. Then also I'll tell you about काला आजार. जो है काला आजार, ये जो होता है माइक्रोब, विच माइक्रोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काला आजार, वी हैव सीन वो प्रोटोजोआ होता है, राइट? द प्रोटोजोवन लाइशमीनिया. और इसका वन वे ऑफ दिस स्प्रेड इज थ्रू द बाइट ऑफ दिस फ्लाई, सैंड फ्लाई बाइट से. सैंड फ्लाई, सो सैंड फ्लाई we can say is responsible, one of the reasons kala azar ke liye. And then you also have one more is the SARS. Okay, filariasis. Okay, filariasis, I was telling you about filariasis. ये भी कभी कभी filariasis, wait, let me correct the spelling. Filariasis, filariasis, या जो एलिफेंटियासिस है, ये भी बहुत सारी मस्किटो बाइट्स जब होती हैं तो I mean for a long time, a lot of mosquitoes, then they will be responsible for the disease known as filariasis. Okay, so I think this is what we had for today. So
दो मेन टॉपिक हमने आज समझे हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दोस टू. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस पार्ट 2 में हम पढ़ लेंगे बाकी के 3 टॉपिक जो मैंने आपको साथ में बताए थे. तो नेक्स्ट टाइम वील ऑल्सो इंक्लूड सम क्वेश्चंस just to understand the topic even better. And in the meantime, आपको और भी कुछ डाउट है infectious diseases में, so please let me know in the comment section, and I will answer your doubts in my next science class, which will be on Tuesday at 2 p.m. Okay, Monday we will have a class at 2 p.m. और वो होगी मैथ्स की, where we will complete our surface areas and volumes का chapter. ठीक है, so let's wind up here and I'll see you in the next class. Have a good day, and if you have liked the session, please hit the like button and share the link with your friends. Not spread of diseases पढ़ी थी ना, इसलिए वो by chance spread हो गया. Okay, so please take care and we'll meet soon in the next class. Sunday अभी for now I'm not going to take sessions. Sunday को नहीं है, Monday to Saturday हैं classes, live sessions. Okay, but we will see as the exams are approaching. If we need, then Sundays we will take, but for now Monday to Saturday. ठीक है? Okay, Arav, thank you, and I'll see you in the next class. Have a